We are delighted to welcome you to this webinar. I, C. Pallavi Agarwal, along with Sandeep Sharma, would be the moderator of this very demanding subject of MSME finance and debt recovery. On this, one milk can produce butter, curd, and more such varieties. Likewise, one simple thought can make us better, cute, and more vibrant and energetic. May Lord Krishna bless you all. A very happy Christmas. When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. So sometimes it would be easy, it's hard. If you stick with what you want to achieve, someday you will. With this thought, I, as a part of JIPA Professional Law Association and Association of Dispute Resolution, welcome you all to today's webinar. Today we have with us a guest of honor, Shri Raj Chawla and Shri welcome, sir. We have us. Raj Chawla is a Central Council member of ICI, Vice Chairman of Direct Tax Committee, MSME. Also a member of Board of Distribution. Shri Gupta member of Commerce and Industry Chairman and co-chairman of the Taxation Committee of Apex Chamber. Shri Gupta is Managing Director of Vidit Wires Limited and Vidit Meltatech Private Limited. With this short introduction, I would like to welcome both the guests of honors of the day. Now I would invite Praveen sir for his welcome address and welcoming participants. Thanks, Pallavi ji. I welcome to our guest of honor, Shri Raj Chawla ji, and Mr. P.D. Gupta ji, and also our eminent speaker, Shri Vikas Jain ji, and Shri Mukesh Mohan Gupta ji, and our moderator, Shri Sandeep Sharma ji, and Pallavi Agarwal ji. And our topic is today's MSME finance and debt recovery. For this, I want to say whenever finance required, that should be optimum finance. That is a capital structure should be optimum. Under inadequate financing or over financing is not for the benefit of enterprises. Source of financing with respect to, there are several: MSME finance, startup finance, and angel finance, banking, NBFC, and more particularly MSME finance is trade receivables discounting at the platform of trade receivable exchange, MSME exchange. And about shortcomings for financing point of view, there are should be more about due diligence and approval at the time of approval and post disbursement should be maintained, so that at appropriate level weaknesses or default can be triggered and measures can be taken at early stage for the debt recovery or revival of the unit. And on account of debt recovery, there are several other measures. One of major is MSME Samadhan portal that can be looked after by MSME Facilitation Center. All state-wise facilitation center are there. They can view and recover the dues. Help them enterprises beyond dues 45 days, more than 5 days, at the 3 times of bank rate, and proceedings to be summed up at within 90 days as per MSME Act. And apart from MSME Act, there are DRT, SURFACI,
and others IVC. So many options are there, but that can be taken at right time. So far as financing also, that can be adequate and timely to be financed by financiers. That is all about my side. And thanks, Pallavi. You can go further. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Raj Chawla sir for his word of wisdom. Thank you, madam. Good evening to all. First of all, I am thankful to the GIPA and CA Praveen Jain ji for giving me this opportunity to interact with all of you. And today he is discussing very good topic with all of us, and we have very good speakers also. हमारे गुप्ता जी, Shri Mukesh Mohan Gupta ji and others. So I will not talk about this technical thing on the MSME financing, but being the vice chairman of MSME committee of ICI, I would like to share with all of you that 2 days back on 18th of August, our MSME and Startup Committee of ICI has started MSME Yatra, in which I was personally there at Mumbai, and it will go for 3 months. It has started on 18th August and it will end on 18th of November in Mumbai itself. So it will cover around 75 cities across 22 states of India. So I would request all of you, if you can join that our MSME Yatra when our MSME bus is in your city. If you are from outside Delhi, then I would be very thankful to all of you. I will share the schedule of our this route with Praveen Jain ji. Praveen ji, आपके पास है ना ये schedule हमारा itinerary? हाँ वो है सर, है ना, तो आप प्लीज अपने ग्रुप में शेयर कर देना। तो जहां जहां भी हमारी बॉम्बे से ये यात्रा शुरू हुई है और 9 सितंबर को ये हमारे नॉर्दर्न रीजन में एंटर होगी। नॉर्दर्न रीजन बोले तो हरियाणा में, गुड़गांव हरियाणा, और उसके बाद ये जीटी करनाल रोड होते हुए सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर, चंडीगढ़, शिमला, जालंधर, लुधियाना, और इस तरह से हम सब जगह इसको लेके जाएंगे। गाजियाबाद, फिर उधर देहरादून जाके और फिर ये वापस इधर आएगी। तो पूरे हिंदुस्तान में ये हमारी यात्रा घूमेगी। और 18 तारीख को जब इसका हमने शुरुआत की है, तब हमारे एमएसएमई मिनिस्टर श्री नारायण राणे जी भी उपस्थित थे वहां बंबई में उसकी शुरुआत में। और इसमें हमें एसबीआई, सिडबी एंड एनएससीआई तीनों लोग हमारे इसमें सहयोगी हैं, और इन सब के साथ मिलके ये एमएसएमई यात्रा शुरू हो रही है। और मैं समझता हूँ इसके शुरू होने से जो हमने एक एक्सपेक्टेड आइडिया लगाया है, क्योंकि जो रेस्पॉन्स हमें मिला है, लगभग 10,000 रजिस्ट्रेशन हमारे बढ़ेंगे इस एमएसएमई यात्रा से। तो मैं चाहूंगा कि आप में से जो लोग भी जुड़ना चाहें, हमारे श्री मुकेश मोहन गुप्ता जी तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, हमारे ये मेंटर हैं, हमें गाइड करते रहते हैं। और भी जो कोई इसमें कोई सहयोग देना चाहें तो आप सबका स्वागत है। और विद दिस आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू जैन साहब फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। Definitely sir, we will join. थैंक यू Thanks sir, thanks. Thank you so much, sir. Thanks a lot. Now I would like to invite PD Gupta sir for sharing few words of wisdom with us. गुप्ता जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। I thank you very much, Jeepa and Praveen Jain ji, for inviting me on this occasion. एक तो ये एमएसएमई यात्रा का पर्पस क्या है, इसका जो यात्रा में ज्वाइन कर रहे हैं, चावला जी ने भी बताया, इसका क्या लोगों को हम क्या बताएंगे, क्या उद्देश्य है इसका ज्वाइन करने से, क्या है? सर, इसका उद्देश्य ये है कि छोटे छोटे शहरों में ये जाएगी। कई हमारे शहरों में लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। पढ़े लिखे लोग तो ठीक है, जो छोटे व्यापारी हैं वो डरते हैं। तो हमने लघु उद्योग के साथ भी टाई अप किया है, एनएससीआई से के साथ भी किया है। ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि जो हमारे छोटे व्यापारी लोग हैं वो हमसे कनेक्ट होंगे।
उससे हम लोगों को एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी डेवलप होगी और हमको उन एक लोगों अवेयरनेस डेवलप करनी है, लोगों को बताना है, अवेयरनेस कैंपेन है, बिल्कुल लोगों सही को है, बताना है कि आप इसमें शामिल होइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, अभी मैं देखता हूँ पटपड़गंज यूनिवर्सिटी में हमारे में काफी लोगों को जानकारी नहीं है, हम जी उनको सर, बता तो रहे हैं आप इसमें आइए। हम अपनी बस को घुमाएंगे, आप हमें थोड़ा सा बस कांटेक्ट कर देना कि भाई इस तरफ कोई बात हम ठीक है। आपसे शेड्यूल डिस्कस कर लेंगे, जैन साहब आपको मेरा हाँ, नंबर हाँ, दे देंगे। हाँ, नहीं प्लीज, ठीक है, मैं बताऊंगा इसको। थैंक यू। अभी जो मैं अभी MSME काउंसिल का मेंबर हूँ दिल्ली ईस्ट का, तो हम यही महसूस करते हैं कि जो लोग एब्सेंट रह जाते हैं, जिनको हम नोटिस भेजते हैं और एब्सेंट रह जाते हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पाते। कई लोग ऐसे जो एब्सेंट रह जाते हैं, उनका भी हमें सोचना पड़ेगा उनको कैसे बुलाया जाए लोगों को। और दूसरे जो केसेस में जो एब्सेंट रह गए और हमारी काउंसिल ने उनको फॉरवर्ड कर दिया आर्बिट्रेशन के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में, वहां पिछले 8 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सारे केसेस वहां पेंडिंग पड़े हैं। तो इसमें पब्लिक को जो गवर्नमेंट बेनिफिट पहुंचाना चाहती है रियल सेंस में MSME यूनिट को, उसका फायदा नहीं पहुंचता। जो लोग शार्प है शातिर हैं, वो लोग अवॉइड कर जाते हैं और हमको कुछ नहीं कर पाते उनको यहाँ पे हम। तो इसके लिए भी कुछ आप सजेशन दें कि उनको कैसे हम उनको इनवाइट किया, कैसे लोगों को बुलाएं। बिल्कुल सर, नहीं उसमें हमारा पर्पज यही है कि जो भी लोग जो MSME इंडस्ट्री है लेकिन MSME में रजिस्टर्ड ही नहीं है, जैसे हमारे मुकेश मोहन गुप्ता जी भी हेल्पलाइन चला रहे हैं, तो इस तरह से हम घर घर जाके आपके द्वार आके आपको सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। और सर मैं जैन साहब माफी चाहूंगा, मेरा टाइम हो गया फ्लाइट का, तो मैं अब माफी चाहूंगा, फिर मैं बाकी बातें बाद में करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप रखिए। हेलो, हाँ जी। हेलो, तो हमारे यहाँ हमारी एसोसिएशन में पटपड़गंज एसोसिएशन में हमारे पास पूरा प्रोविजन है, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत है हमारे एसोसिएशन में आए, हम हेल्प करेंगे उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जो भी हमारे मेंबर हैं पटपड़गंज के, हम उनको सबको गाइड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। पर इसके बारे में सोचे कि आगे इन लोगों को कैसे, जो वहाँ आर्बिट्रेशन के लिए जो केसेस जारी पेंडिंग पड़े हैं, उनका क्या सॉल्यूशन निकलेगा, वहां कोई एक्शन नहीं हो रहा है अभी तक। इसमें आप सजेस्ट करें प्रवीण जी, आप बताएं कौन कौन एक्शन लेगा, किसको हम अप्रोच कर सकते हैं। जो भी हमारी टीम में जुड़े हुए हैं, शायद मिस्टर विकास जैन जी हैं या मुकेश मोहन गुप्ता जी हैं, कोई भी इनका सजेशन हमको बताएं कि हम उसको कैसे उन लोगों को जागृत करेंगे। वो हाईकोर्ट में जाकर केसेस पेंडिंग हो रहे हैं, तो MSME को जो गवर्नमेंट फायदा पहुंचाना चाहती है वो लोगों को फायदा नहीं मिल रहा उसको। परवीन जी, परवीन जी। यस सर। मेरे को माइक अनम्यूट कर दें तो मैं थोड़ा कहना चाहूँ। पल्लवी जी प्लीज अनम्यूट। पल्लवी जी प्लीज अनम्यूट अशोक कुमार जी। Ashok sir, please go ahead. You are unmuted. यस सर। अनम्यूट है? यस सर। अच्छा, हाँ गुप्ता जी जो कंसर्न बता रहे हैं, गुड इवनिंग टू ऑल। थोड़ा मिक्सिंग लैंग्वेज में कहूँगा, गुप्ता जी की जो इसमें चिंता है वो बड़ी जेन्युइन है। मैं तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख रहा हूँ कि इसमें जो एक्चुअली जो MSME का जो मेन एम था वो जो है आपका सस्ता न्याय, अच्छी ये जो है बेस्ट, मतलब आपको बेस्ट जो है आपका जो है फैसिलिटेशन सेंटर पहले काम करता था गुजरात में, अब भी काम कर रहे हैं। कुछ स्टेट्स में ऐसी प्रॉब्लम है कि फैसिलिटेशन सेंटर में वो जो ऑलरेडी मीडिएशन के जो 3500 रुपए लेके और वो जो ऑर्डर वगैरह बनाते थे वो बनाते ही नहीं है आजकल। और एक्चुअली क्या कि पावर्स नहीं है या क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से वो आर्बिट्रेशन सेंटर में रेफर कर देते हैं। आर्बिट्रेशन सेंटर में अपनी अलग फीस है, वहां पे तो 2 लाख से कम की फीस किसी की है ही नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, मैं आर्बिट्रेशन मैटर भी डील करता हूँ। तो पहले MSME का एक बेनिफिट सिर्फ आपका ये जो ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन में तो आप अपने वो जो है उसको रिबेट दे दिए। बाकी जो दूसरे और मैटर्स हैं, जैसे वाले सिविल कोर्ट में फाइल करना पड़ता है, तो सिविल कोर्ट में फाइल करना पड़ता है, तो सिविल कोर्ट में फाइल कोई बेनिफिट नहीं है। सिर्फ जो है ये एक्चुअली क्या है कि ये जो मैटर्स हैं इनको हाई कोर्ट में रिट के जरिए क्या बेनिफिट हुआ है MSME का,
अगर वो आर्बिट्रेशन सेंटर के लिए वहां पे आर्बिट्रेशन सेंटर रेफर हो गया और वहां पे तो फिर वो लेंथी प्रोसीजर्स है, और लेंथी प्रोसीजर से जो वो बाहर की जो कंपनियां हैं मल्टीनेशनल्स, उनके मैटर्स मोस्टली उनके मैटर होते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर्स के बड़े मैटर्स होते हैं। अब एमएसएमई के जो मैटर्स हैं ये इसलिए बनाए गए थे कि भाई इनको जो है आप रजिस्टर्ड करके, और ये आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में जो एक 3500 रुपए फीस थी कुल आपकी इसमें, तो 3500 रुपए फीस करने के बाद में वो अपना एक ऑर्डर बना देते थे। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट दूसरी पार्टी जाना चाहे या ना जाना चाहे, वॉट एवर लाइक टू डू। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि अब ये जो एक्चुअली फैसिलिटेशन सेंटर काम ही नहीं कर रहा अपना, वो फीस ना तो वो फीस लेते हैं, मान लीजिए वहां पर लें, कंसिलेशन में पावर नहीं है, कंसिलेशन में पावर नहीं तो एक्स पार्टी ऑर्डर पास करके और अपनी फीस लेके, पहले भी होता था ना, गुजरात में अब भी कर रहे हैं। तो मैं कह रहा दिल्ली में क्यों नहीं करते उसको, कि अगर मान लीजिए वो जो कंसिलेशन के लिए डिनाई कर दिया या एक्स पार्टी उसको जो आपने सबमिशन है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर पास कर दें, और उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अगर उसे जाना है तो वो जाए। तो मेरा गुप्ता जी से एक ही उसमें ये है कि दिल्ली में भी ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रहे जैसे लोग? दिल्ली में हमारी काउंसिल में जी कोई फीस नहीं है। यहाँ दिल्ली के अंदर जितने भी केसेस लोगों ने डाले कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हमारे अपने दिल्ली ईस्ट में करीब करीब मैं समझता हूँ 1800-1900 केस पिछले एक साल में हमने डील किए हैं, जिसमें से 1200 केस के करीब करीब हम सेटलमेंट कर चुके हैं, और 500-600 केस ऐसे हैं जिनको हमने हाईकोर्ट में रेफर किया है। और आज की डेट में हमारे पास हमारी काउंसिल पे केवल 100 के करीब केस, 80-90 केस ही बाकी बचे हुए हैं पिछले। वो सब म्यूचुअल अगर मान लिया कंसिलेशन में रिजोल्व नहीं हुए तो उनको जो आप ऑर्डर बना कर देना, पावर्स तो है ना उसके। जो इनके पास एक प्रोविजन है, अगर कंसिलिएशन में सेटल नहीं हो रहे तो ये आर्बिट्रेशन सेल अपनी भी बना सकते हैं, पर ये बना नहीं रहे हैं। हाँ, ये एक्चुअली आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट सेल जो अपनी बनाए और वहीं पर अपॉइंटमेंट कर दें। हाँ, ये अपनी सेल बनाए, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अपने हाथ में है, वो अपनी सेल भी बना सकते हैं। पर हमारे यहाँ वो कह रहे हैं हमारे पास जगह नहीं है, प्रोविजन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री है उसमें मेरी बात हो रही थी, उन्होंने वो अमेंडमेंट के कुछ अमेंडमेंट के लिए कुछ सजेशंस वगैरह मांगे थे कि आप सजेशंस दो, तो उसमें भी आपने यहाँ सेंटर में उन्होंने कहा था कि एमएसएमई में हम इसमें जो सजेशंस लोगों से लेना चाह रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि बेनिफिट ही क्या रहा फिर एमएसएमई का, अगर वो आर्बिट्रेशन में ही जाना है उनको तो फिर एमएसएमई का बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है। तो दूसरी पार्टी कहाँ मानती है कंसिलिएशन से? हमारे जो एसडीएम है वो अच्छा काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन वो यहाँ हेल्पलेस हो जाते हैं। कहते जब हमारे पास जगह नहीं है, हम प्रोविजन करें, आर्बिट्रेशन सेल बनाए यहाँ पे अपना, तब वो प्रोविजन हो सकता है उसका। नहीं, एक्चुअली क्या है आर्बिट्रेशन सेल के लिए तो जगह है। अब एक्चुअली क्या है कि ये डीडीओ मार्ग पे जहां मेरा चैम्बर है वहां बराबर में सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्बिट्रेशन के बिल्डिंग्स वगैरह बना के उसी में आर्बिट्रेशन डील करने के, जैसे दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर है हाई कोर्ट में, इस टाइप का इधर बनाने का विचार है। तो वो अपनी फीस ले लेते हैं, जैसे आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लब है आपका नीति बाग का, यहाँ पे भी मैंने कितने सारे आर्बिट्रेशन डील किए। लेकिन आज ये एक्चुअली क्या है कि वो जो आर्बिट्रेशन सेंटर है उनका अपना सिस्टम है, तो उनकी फीस वगैरह, हाँ, तो उनके खर्चे इसी तरह से एक्सपेंसिस है उनके। अब एक केस में आप ये देख लो 3 आर्बिट्रेटर चेंज हो गए, किसी ने फाइनल नहीं करा वो। हाँ, तो फिर फायदा नहीं हुआ ना किसी को, फायदा क्या हुआ उसको? अब इतना सारा एक्सपेंसिस आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो पावर्स हैं ये डेलीगेट पावर्स, मान ली रिटायर्ड जज ले, एक्सपीरियंस लॉयर लें, तो उनको आर्बिट्रेटर नॉमिनेट करें। और आजकल तो अच्छी आर्बिट्रेशन एक्ट बहुत अच्छा है, अगर मान लीजिए आपने नॉमिनेट कर दिया और अगर वो जब तक उसके अगेंस्ट स्टे, कोई भी कोर्ट उनके अगेंस्ट स्टे ग्रांट नहीं करेगी जब तक कि उनका कंडक्ट ऑब्जेक्शनेबल ना हो। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आप हाई कोर्ट से परमिशन लेके कि ये रिट पढ़े, रिट पढ़ने के बाद में ये हो भाई ये जो है अगर मान लीजिए कॉस्टली, अगर कॉस्टली जस्टिस मिल रहा है तो वो तो बहुत पर्पस डिफीट कर रहा है एमएसएमई का। तो कॉस्टली ना होके उसको जो है ये पावर मिले इसको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की, और आर्बिट्रेटर अपना एक्सपेंसेस बता के, वो जनरली प्राइवेट आर्बिट्रेटर भी काम करते हैं, तो वो यहीं से डील हो ना। अब एक्चुअली क्या है कि उनके जो सिस्टम है वो तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनका वे तो जल जाते हैं। अब किसी भी आर्बिट्रेशन में 5-7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए से कम का नहीं पड़ता, वो एक्सपेंसेस अपने अलग लेते हैं। तो पर्पज क्या हुआ इसका? अब उसमें जो है ना ऑलरेडी यही था कि भाई अगर आप दूसरी कोर्ट में अपील भी करेगा वो तो 25% जमा कराना पड़ेगा उसको।
तो जमा तो जब कराए कि पहली स्टेज से ओवर हो, क्लियर ही नहीं हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ गुप्ता जी, आप एक दिन मुझे आप टाइम दे दो तो मैं आपसे साथ बात करके इसमें जो है ना आप रिट दिलवाओ हाई कोर्ट में, और रिट हाई कोर्ट ये डायरेक्ट करेगी कि इसमें जो है ना आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट की जो पावर्स हैं वो जो है ये नॉमिनेट करने की दोनों पार्टीज का, आजकल तो एक बहुत बढ़िया है कि उनके खिलाफ स्टे ही नहीं होता जो अपॉइंटमेंट हो जाती है, कहते हैं आप काम करने दो, अगर कोई कंडक्ट में प्रॉब्लम आती है तब आप आना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो है ना पर्पज ही डिफीट हो रहा है। बड़ी पार्टी या रिटायर्ड जज वगैरह है, उनको टाइम ही नहीं होता ना वो काम करते कराते। तो मैं तो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भुगत हो ही रहा हूँ। और कंसिलेशन में कितने लोग मानते हैं, बिजनेस में तो कंसिलेशन जो है आपका वैसी सक्सेस रेट कम है, फैमिली मैटर्स में तो और ज्यादा कम है। तो ये तो कंसिलेशन की तो जो कंसेप्ट है वो इंडिया में है ही नहीं एक्सेप्टेबल। थोड़े बहुत लोग जो मान जाते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे दूं। भाई साहब इनकम टैक्स में उसने उसका 26 ईयर्स में मेरे बिल्स का क्रेडिट ले लिया, टीडीएस काट लिया। अब बताओ इससे ज्यादा एक्सेप्टेबल बिल है मेरे, लेकिन मुझे जो है जब मैं जा रहा हूं आर्बिट्रेशन में तो मेरा जो अमाउंट है वो है 7 करोड़ का। अब 7 करोड़ में जो जाना चाह रहा है उसमें आप मुझे को 30 लाख के करीबन जो वो देनी पड़ेगी आर्बिट्रेशन फीस। तो मेरे को क्या पर्पज हुआ? तो अगर मैं मान लो एमएसएमई मेरा रजिस्ट्रेशन है, अब रजिस्ट्रेशन का क्या फायदा हुआ मेरे को? तो मैं तो देखता हूं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है ये बड़ा टिपिकल है। और जब तक ये काउंसिल नहीं जाएगी वहां पे हाई कोर्ट में, काउंसिल जाए और हाई कोर्ट में वो भाई ये डायरेक्शन दे दें कि ये अपॉइंटमेंट के लिए कर ले, और दूसरा डिपार्टमेंट ये वो हाई कोर्ट तो इसमें जो ऑर्डर करेगा ना डायरेक्शन के, तो कोई लेना ही नहीं चाहता डायरेक्शन। अब जो आपकी तो कॉम्पिटेंट बॉडी है वो बॉडी जो है इसको परस्यू करे और हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले। तो मेरी तो यही सबमिशन थी गुप्ता जी आपके उसमें। ये तो डिसीजन काउंसिल के चेयरमैन लेंगे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चेयरमैन और आप सब लोग बोल सेम, मैं उसी को काउंट कर रहा हूँ आपको और चेयरमैन सभी को काउंट कर रहा हूँ। तो वो आप अपने आप प्रपोजल रखें। नहीं सभी करेंगे जिसको मिलकर के। नहीं तो काउंसिल वाले अपने आप प्रपोजल रखते हैं, उसको पास कर ले, पास करने के बाद में फिर मूव कर ले। आप तो सब नोबल पर्सन हैं, तो नोबल पर्सन के अंदर जो है वो प्रपोजल आ जाएगा, प्रपोजल पास करके। तो जैन साहब मेरे से बता रहे थे, मेरे सहयोगी हैं कि गुप्ता जी बहुत ही बढ़िया आदमी है। तो मैंने भी आज मैं मीटिंग में हूँ, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सिविल मैटर्स करता हूँ मैं। तो मेरे पास पहले डीआरटी के मैटर हैं और ये जो है एमईएस का, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेरा पैनल है। तो आर्बिट्रेशन के मैटर्स में मेरे को दिखाई पड़ता है एमएसएमई का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। पहले होता था कि चलो कोई लोग रिटायर्ड वगैरह बना के वो अपना कर देते थे ऑर्डर पास, अब कोई करता ही नहीं है। गुजरात में क्यों सक्सेस है ये? गुजरात वाले क्यों करते हैं बताओ? गुजरात में आज भी चल रहा है, मेरे पास ऑर्डर है उसके, कोर्ट में जाके हमने जो उसको चैलेंज करा 25% जमा करा कर। लेकिन यहाँ दिल्ली में क्यों नहीं करना चाहते, या और स्टेट में क्यों नहीं करना चाहते? टाइम नहीं है। तो वो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ गुप्ता जी कि काउंसिल में प्रपोजल लाया जाए और उससे कहा जाए कि हाई कोर्ट डायरेक्शन दे, दूसरे स्टेट में भी है तो इसी स्टेट में भी करें। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश थी। और सॉरी मैंने आपका टाइम लिया, मैं आपकी मीटिंग चल रही है बड़ी वैल्यू नोबेल पर्सन की, मैं एक्चुअली फ्री मूड में हूँ और फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरठ से एक चौधरी नाम है मेरा। तो वो सर करता हूँ मैं सिविल प्रैक्टिस ही अपना काफी दिन से ही, मतलब मेरे को कॉन्ट्रैक्टर्स की इनकी विजिट्स में जो सिविल प्रैक्टिस का काम। थैंक यू अशोक कुमार जी एंड पीडी प्लीज प्रोसीड फर्दर। गुप्ता सर मैंने तो बता दिया, अब आप देखें और बताएं जो और सज्जन ओके सर, मेरे को जो इश्यू थे मैंने बता दिया आपको। वी विल डिस्कस लेटर सर विद द पर्सनल मीटिंग सर ना। श्योर थैंक यू डेफिनेटली। थैंक यू। नाउ पल्लवी जी प्लीज प्रोसीड फर्दर। Now coming to the most awaited part, our first speaker of the Vikas Jain sir. CA Vikas Jain is a reputed CA who founded Finance Seva. His financial cleverness has helped Finance Seva bag the most competitive credit solution in the market from all leading banks and MBSEs, ensuring fairness in all aspects of strategies.
product design and delivery, customer literature and correspondence, and financial promotion, administration and complaint handling. Thank you so much. Now I welcome Sri Vikas Jain sir for his. Sir, the dice is all yours now, sir. विकास जी प्लीज सर। आज मैं आप सब लोगों को एसएमई फाइनेंस के बारे में जानकारी दूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि एमएसएमई को लोन अप्रूवल में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और उन सभी प्रॉब्लम्स का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एमएसएमई लोन के लिए गवर्नमेंट की कई स्कीम्स हैं जिनका फायदा एमएसएमई उठा सकते हैं। उनमें से कुछ स्कीम्स की जानकारी आज सभी के साथ मैं शेयर करूंगा। इसी के साथ साथ सिडबी और एग्जिम बैंक की कुछ स्कीम्स हैं जिनकी जानकारी आज मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसका एमएसएमई फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा आज कुछ जानकारी दूंगा जिससे एमएसएमई अपना इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं और कम कोलेटरल सिक्योरिटी में अधिक लोन प्राप्त कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी में एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है। आज देश में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई है और जिन्होंने 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान किया है। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में एमएसएमई सेक्टर की 50% की हिस्सेदारी है। एमएसएमई की डेफिनेशन में अमेंडमेंट के बाद एमएसएमई को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है माइक्रो इंटरप्राइजेज एमएसएमई में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होता है प्लांट एंड मशीनरी में और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक होता है। दूसरा स्मॉल इंटरप्राइजेज कंसीडर होते हैं जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के लिए 10 करोड़ हो सकता है और मैक्सिमम टर्नओवर 50 करोड़ तक का हो सकता है। मीडियम इंटरप्राइजेज में कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के लिए 50 करोड़ तक हो सकता है और जिनका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक हो सकता है। एमएसएमई सेक्टर का इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी उनके बिजनेस के लिए फाइनेंस करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए कई कारण हो सकते हैं। मैं एक एक कारण करके आप सभी को पर डिस्कस करूंगा और साथ ही इन समस्याओं के लिए सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए ज्यादातर एमएसएमई इंटरप्राइजेज का बैकग्राउंड टेक्निकल और मार्केटिंग का होता है, जिससे फाइनेंशियल प्रोडक्ट की सही जानकारी नहीं होती और ना ही वो किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से संपर्क करते हैं। ज्यादातर एमएसएमई लोन प्रोडक्ट अपने बैंकर के सुझाव पर सिलेक्ट कर लेते हैं या किसी बैंक के डीएसए से सलाह लेते हैं। ये उसी तरह से है जैसे कि आप बीमार होते हैं और बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए बिना मेडिकल शॉप से मेडिसिन परचेज कर लेते हैं। यह तरीका सही नहीं है। प्रॉपर डॉक्टर ही आपको सही मेडिसिन रिकमेंड कर पाएगा। उसी तरह से एमएसएमई एंटरप्रेन्योर को भी अपनी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए और सही फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहिए। एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन और गलत लोन प्रोडक्ट सिलेक्शन से बिजनेस के कैश फ्लो पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। अब मैं एक एक करके एमएसएमई की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता हूँ। नंबर 1, शॉर्टेज ऑफ द कोलेटरल सिक्योरिटी ऑन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी कम होना या फंड कम। बैंक्स और एनबीएफसी क्लाइंट सिक्योरिटी के बिना लोन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते और नए आइडिया मैच्योर नहीं हो पाते। नए एंटरप्रेन्योर के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी का अरेंज करना मुश्किल होता है। इनिशियल लेवल पर कोई भी बैंक बिना सिक्योरिटी के लोन अप्रूव नहीं करता, लेकिन बैंक की कई स्कीम्स हैं जिनके जिसमें बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन मिल सकता है। मेरा सुझाव है कि सही लोन प्रोडक्ट को मिक्स करके एमएसएमई डिजायर लोन अरेंज कर सकते हैं। यह एक केस स्टडी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी है जिसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ है, जिसमें 50 करोड़ का एक्सपोर्ट टर्नओवर है। कंपनी के पास 2 करोड़ की कोलेटरल सिक्योरिटी है। कंपनी कॉर्पोरेट को प्रोडक्ट सेल करती है और रॉ मटेरियल भी कॉर्पोरेट से परचेज करती है। इस कंडीशन में सही प्रोडक्ट मिक्स को यूज करके कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट का फंड अरेंज कर सकती है। उदाहरण के लिए कंपनी सिडबी से 5 करोड़ रुपए तक का मशीन लोन बिना सिक्योरिटी के प्राप्त कर सकती है। कंपनी विदाउट सिक्योरिटी के परचेज बिल डिस्काउंटिंग के लिए बैंक्स और एनबीएफसी के पास जा सकती है।
कंपनी सेल बिल डिस्काउंटिंग के माध्यम से बिना सिक्योरिटी के डेटर्स के बिल डिस्काउंट करा सकती है, और कंपनी एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग भी करा सकती है एक्सपोर्ट बिल के अगेंस्ट, और कैश क्रेडिट लिमिट और प्री शिपमेंट क्रेडिट अवेल कर सकती है कोलेटरल सिक्योरिटी 2 करोड़ की वैल्यू पर। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि 2 करोड़ की कोलेटरल सिक्योरिटी से 30 से 35 करोड़ रुपए तक का लोन प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी प्रॉब्लम एमएसएमईज की है लैक ऑफ एक्सेस ऑफ द फाइनेंशियल सॉल्यूशन। इंडिया में बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि एमएसएमई को लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सभी एमएसएमईज को इन सभी ऑप्शंस का पता नहीं है, और ये सभी एमएसएमई के लिए उपलब्ध भी नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे लोन प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, लेकिन कई ऐसे एमएसएमईज हैं जिनको इस सभी लोन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, और कई बार मल्टीपल लोन प्रोडक्ट इन एमएसएमई को अवेलेबल नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। कई एमएसएमई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते और ना ही उनका एनुअल प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। इसी वजह से बैंक के लिए यह मुश्किल होता है कि वो सही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट का पता कर पाए। हालांकि कुछ बैंक्स ने जीएसटी रिटर्न के बेसिस पर क्रेडिट अप्रेजल शुरू किया है, लेकिन एमएसएमई के लिए बेटर है कि वह अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करें और सभी लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करें। आज एक्चुअल प्रॉफिट डिक्लेयर करें, जिससे उन्हें लोन लेने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं हो। बुक्स ऑफ अकाउंट करना बैंक के अलावा फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग के लिए भी जरूरी है। प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होने पर एमएसएमई एक सही निर्णय ले सकते हैं। चौथी प्रॉब्लम होती है कि मेजर ट्रांजेक्शन एसएमईज का कैश में होता है। बहुत सारे एमएसएमई अपने सेल कैश में करते हैं और 40 से कम उनकी सेल होती है, जिससे उन पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं होता। इस कंडीशन में बैंकर के लिए ये असेसमेंट करना बहुत मुश्किल होता है कि बोरोवर की एक्चुअल सेल कितनी है और उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी। इस तरह के एमएसएमई स्टॉक रजिस्टर भी मेंटेन नहीं करते। इस वजह से बैंक के लिए प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल करना मुश्किल होता है। इस साइज के एमएसएमईज के लिए सबसे बेटर है कि वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम और अदर पेमेंट वॉलेट से पैसा प्राप्त करें, जिससे उनकी सेल्स को जस्टिफाइड किया जा सके। और एक और मेजर प्रॉब्लम जो एसएमईज में होती है कि उनके यहाँ प्रॉपर सिस्टम्स और प्रोसीजर वो फॉलो नहीं करते हैं, और वो सारा कार्य खुद ही करना चाहते हैं, चाहे वो सेल्स का हो, चाहे एचआर का हो, चाहे अकाउंट डिपार्टमेंट का हो। यह एमएसएमई एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी गलती होती है। एक पर्सन सभी फील्ड्स का मास्टर नहीं हो सकता। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द एसएमईज का बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो पाता। इसलिए मेरा सुझाव है कि एमएसएमईज को अपने बिजनेस में प्रॉपर सिस्टम और प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब मैं सिडबी की कुछ स्कीम्स के बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। सबसे पहले स्थापन स्कीम के बारे में बताना चाहता हूं। इस स्कीम में मैक्सिमम लोन 20 करोड़ रुपए तक मिल सकता है। 5 करोड़ तक के लोन के लिए 3 इयर्स का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यदि एमएसएमई 5 करोड़ से ज्यादा लोन लेता है तो प्रमोटर्स को 5 ईयर से ज्यादा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सभी इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनका लाभ उठा सकते हैं, इन स्कीम्स का उठा सकते हैं फायदा। इसमें प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन 25% का होना चाहिए, और इस स्कीम में मैक्सिमम लोन टेन्योर 7 साल का हो सकता है, और इस स्कीम में मोरेटोरियम पीरियड 2 साल का हो सकता है। सिडबी की दूसरी स्कीम है एराइज सिडबी की दूसरी स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत 100% प्रोजेक्ट कॉस्ट की फंडिंग हो सकती है, और इस स्कीम में लोन अमाउंट का 25% तक की एफडीआर देनी होगी। इस स्कीम में मैक्सिमम लोन 7 करोड़ तक का हो सकता है। इस स्कीम को अवेल करने के लिए एमएसएमई यूनिट का 2 इयर्स का विंटेज होना जरूरी है, और दोनों सालों में कैश प्रॉफिट होना चाहिए। तीसरी सिडबी की स्कीम है स्पीड। सिडबी की थर्ड स्कीम है स्पीड। इस स्कीम में मैक्सिमम लोन 2 करोड़ तक मिल सकता है। इस स्कीम में 100% मशीन कॉस्ट को फंड किया जा सकता है। इस स्कीम में लोन अवेल करने के लिए 3 इयर्स की एमएसएमई यूनिट की विंटेज होनी चाहिए, और मैक्सिमम टेन्योर ऑफ लोन 5 साल का होना चाहिए। चौथी स्कीम है ग्रीन फाइनेंस स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत सिडबी ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए फंड प्रोवाइड करता है। ग्रीन प्रोजेक्ट में वाटर मैनेजमेंट एफिशिएंसी, वाटर
वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ग्रीन बिल्डिंग जैसे प्रोजेक्ट कवर होते हैं। इस स्कीम में 20 करोड़ तक का लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके बाद में कुछ MSME एग्जिम बैंक की 2 स्कीम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। पहली स्कीम है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस। यदि इंडियन कंपनी को ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करना हो तो एग्जिम बैंक टर्म लोन के फॉर्म में ये लोन प्रोवाइड करती है। इसके लिए MSME किसी ब्रांड को परचेज कर सकती है या किसी कंपनी को परचेज करना है उसके लिए भी प्रोविजन होता है। हेलो, हाँ पल्लवी प्लीज कैरी ऑन। पल्लवी सुन रहे हैं आप? हेलो, अनम्यूट करो अपने आप को। कर तो लिया। हाँ पल्लवी जी प्लीज कैरी ऑन। प्लीज कैरी ऑन पल्लवी जी। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा पल्लवी जी। हेलो, आवाज आ रही है विकास जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हेलो बताइए। हेलो। हाँ आ रही है सर। आ रही है। यस सर। अच्छा हाँ ठीक है। आज मैं कुछ केस स्टडी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कैसे सही प्रोडक्ट मिक्स को यूज करके कोई भी MSME अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट को कम कर सकता है। मैं 3 उदाहरण इसके लिए आपको देना चाहूँगा कि 10 साल पहले मैं एक क्लाइंट से मिला जिनका रैगजीन मैन्युफैक्चरिंग का काम था और उनकी टर्नओवर 100 करोड़ की थी। उस समय उनका लोन 13% के ब्याज दर पर चल रहा था। मैंने उनके बिजनेस में मैक्सिमम रॉ मटेरियल केमिकल का होता है जो कि वो इम्पोर्टर से खरीदते हैं। मैंने उनके बिजनेस को पूरा स्टडी किया और उनको सजेशन दिया कि ये रॉ मटेरियल आप खुद इंपोर्ट कीजिए बजाय कि लोकल इंपोर्टर से परचेज करने के लिए। वह इस बात के लिए रेडी हो गए और हमने उनको 22 क्रेडिट 3% के ब्याज दर पे अरेंज कराया। इस तरह से उनका लगभग 2 करोड़ रुपए पर एनम का इंटरेस्ट की सेविंग हुई। एक दूसरा केस और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे क्लाइंट हैं, वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रिफिलिंग का कार्य करते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते थे। इसके लिए उनका 20 करोड़ का लोन अप्रूव हो गया था 8.5 के ब्याज दर पर। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको सजेशन दिया। मैंने उनसे पूछा कि आप जो फाइनल प्रोडक्ट है इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं इसको ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि आप इसके लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए और 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 फॉरेन करेंसी में लोन अवेल कीजिए। मैंने उनको फॉरेन करेंसी टर्म लोन अरेंज करके दिया जो कि 4.5% पे उनको अरेंज हुआ और इस तरह से उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी भी बचाई और इंटरेस्ट कॉस्ट भी बचाई, जिससे उनका ओवरऑल 15 करोड़ की लोन की सेविंग हुई। एक और गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि MSME कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल को बिना इंपोर्ट ड्यूटी पे किए इंपोर्ट कर सकते हैं और अपनी लाइबिलिटी को डिफर कर सकते हैं। यदि एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी और यदि वो डोमेस्टिक पर्पज से जब कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस से निकालेंगे तब उनको ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से वो अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को बचा सकते हैं।
अब मैं कुछ लोन प्रोडक्ट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें मिनिमम सिक्योरिटी की जरूरत होती है और आप कम से कम सिक्योरिटी में ज़्यादा से ज़्यादा लोन अवेल कर सकते हैं। नंबर 1, बिल डिस्काउंटिंग, सेल बिल डिस्काउंटिंग। अगर यदि आपके कस्टमर या किसी MSME के कस्टमर बिग कॉर्पोरेट्स हैं जिनका रेटिंग अच्छा है, तो उनके बिल को बैंक्स और NBFC बहुत अच्छे रेट पे डिस्काउंट कर सकते हैं, जिसके लिए किसी भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी। दूसरा केस, परचेज बिल डिस्काउंटिंग। इस परचेज बिल डिस्काउंटिंग में यदि आप किसी कॉर्पोरेट से परचेज करते हैं जिसकी रेटिंग अच्छी है, तो उस केस में भी कुछ NBFC और बैंक आपकी परचेज बिल डिस्काउंटिंग कर देते हैं, और जिसके लिए वो किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती और बहुत रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे वो आपको लोन प्रोविजन कर देते हैं। तीसरी फैसिलिटी है एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंटिंग। अगर आपके MSME कोई MSME एक्सपोर्टर है, तो वो अपने एक्सपोर्ट बिल डिस्काउंट करा सकता है आफ्टर पोस्ट शिपमेंट। चौथा है कि ज्यादातर MSMEs के लिए होम लोन के सभी के होम लोन बेसिकली चल रहे होते हैं, और उनके पास अगर कोई दूसरी सिक्योरिटी नहीं है, तो कुछ बैंक्स हैं जो होम लोन की सिक्योरिटी पे ही एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट दे देते हैं, जो कि लगभग 150% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू तक चला जाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर प्रॉपर SMEs को जानकारी हो प्रॉपर लोन प्रोडक्ट की, तो वो बहुत कम सिक्योरिटी में और काफ़ी सस्ते रेट पे फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। We covered every portion of the topic so comprehensively. I'm sure it would have helped each one of us to learn and start implementing in real life without any problem. Thank you so much once again. Now coming to our second speaker of the day, CM Mukesh Mohan Gupta, whose experience is in itself speaks his CV runs for more than 5 pages itself. So how vibrant he is. His 30 years of experience in auditing, accounting, finance, law, banking, economics, and MSME. He started MSME Ki Pathshala, a mobile app-based education platform under which he conducts courses on various entrepreneurship covering different aspects of starting and running a business. He was also invited by our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to discuss the current economic situation and the way forward. That was such a fruitful he was also invited by the Honorable Prime Minister Narendra Modi to discuss the current economic situation and the way forward. We are blessed to have such a vibrant personality within us. Welcome, sir. Please guide us. Now, platform is all yours. Thank you very much, friends. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you very much. Dear C. Raj Chawla ji in absentia, Mr. PD Gupta, Mr. Vikas Jain, Shri Praveen Kumar Jain ji, Piyush Jain ji, Sandeep Sharma ji, and Pallavi Agrawal ji, and all the participants. First of all, I would like to extend my gratitude for organizing such an informative webinar. And today's topic for me is delayed payment of these MSMEs and the way forward. So friend, I would like to just submit one thing, that this discussion of today should not be a single way. It should be a two-way communication. So whenever the any of the participant has any issue, may I kindly request that please mention it on the chat box. I'll try to reply each and every answer to the best of my knowledge and ability. And whenever, because this is perhaps my way of learning, that whenever I will not be able to reply to any of the question, in fact, being raised by any of the participants here, I will try to study the same, in fact, today night, and will come up with some answer tomorrow. So please make this conversation a two-way communication. Whenever you have any doubt, any issue, please just let me know. You can just send me a chat in the chat box. I will try to read each and every chat, and will try to
answer your questions. So friends, can you allow sharing of screen, ma'am? Pallavi, can you allow sharing of screen? Yes, sir. You can share your screen, sir. Okay. I hope it is visible now. No? Yes, visual, sir. I'll just open the chat box also. Yeah. So before start of this delayed payment issue, just briefly I would like to discuss about the definition of micro, small and medium enterprises. So I suppose all of you will be aware that this act, which is Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, was enacted in 2016. On 2nd of October 2016, this act, which is called in short MSMED Act, that is Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2016, was enacted. According to which the definition of MSME was also defined for the first time. And it was based on the investment in plant and machinery in case of manufacturing and investment in equipment in case of service sector, because it is well defined that under MSME only two sectors are covered. One is manufacturing and service sector. The trading activities are not so far covered under MSME. There has been a latest notification which I will also discuss regarding the trading activities in during the course of my discussion. So since 2016, there was a lot of sorry, it was 2006. 2016 one IBC. So 2006, since 2006, there were a lot of demand from these micro, small and medium enterprises to revise the definition, because as per the definition being defined under MSMED Act 2006, for manufacturing sector, investment in plant and machinery was up to 10 crore, and for service sector, investment in equipment was up to 5 crore rupees. So considering the request by these MSMEs, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises has issued a notification during 26th of June 2020 on the definition of MSME and procedure to get the Udyam registration. Perhaps you all will be aware that before this notification, the only registration which was available for MSMEs were Udyog Aadhaar registration. Now the name has also been changed from Udyog Aadhaar to Udyam registration, and the date was extended again and again, in fact, for conversion of Udyog Aadhaar to Udyam registration. Now that the extension of date has already been expired, and now as on today there is only one registration, that is called Udyam registration. So my request will be here to my all fellow friends who are most of them may be either MSMEs or the professionals, be the chartered accountant, company secretary, advocates, or some other professional. So my request is that, as I was referring to, that manufacturing and service sector both are covered under this MSME definition. Please get this Udyam registration today itself, because it is available free of cost online, and all the professionals being the service provider are also covered under MSME. So this is this table just clarifies the the definition which was before 26th of June 2020 and the current definition. So there are 2-3 changes that have happened. In fact, that earlier there was difference in manufacturing sector and service sector. Different criteria were there for manufacturing and service sector, as I was referring to, that 10 crore and 5 crore investment in plant and machinery. Now there is no difference
as far as manufacturing sector and service sector is concerned. For both the sectors, in fact, be it manufacturing or service sector, the criteria are same. But a major change has been done with this notification of 26th of June, that earlier, whereas there was only criteria was investment in plant and machinery or equipment, now the turnover criteria has also been added. So micro enterprises are those enterprises investment up to 1 crore rupees and turnover up to 5 crore rupees. Small enterprises are those where investment in plant and machinery is up to 10 crore rupees and turnover up to 50 crore rupees. And medium enterprises are where investment is up to 50 crore and turnover is 250 crore. Very important thing is the end when I'm talking, in fact, because both the conditions have to be fulfilled to be classified under any category. So, for example, if there is a company or then an enterprise where the investment in plant and machinery is up to 1 crore rupees and the turnover is 5 crore 1 lakh, so it will automatically fall under a small category. One or two another very major changes have been done with this notification. Earlier, the investment in plant and machinery or equipment, the purchase price was to be considered. Now, with this notification, a very major change has been done that only the WDV has to be considered as far as the investment in plant and machinery. So, as I was referring to, that it is totally online and you have to go to a particular site. I'll just refer and inform the site name also, where you can get your Udyam registration absolutely free of cost over a period of maximum 7 minutes, because we have tried to get the Udyam registration and we could find that you can get your Udyam registration maximum in 7 minutes. So it is linked with your income tax return as far as the investment in plant and machinery or equipment is concerned. When I say that it is linked with ITR, so because in income tax return, the WDV is there. So the investment in plant and machinery here will be based on the written down value. And as far as turnover is concerned, one very important change has been done, that export turnover to be excluded for calculation of the turnover. So suppose there is a company having an export turnover of 200 crore and domestic turnover of 2 crore rupees, only 2 crore rupees turnover will be considered for classification of that enterprise into micro, small or medium enterprises. And these turnover and investment are now fetched by the department from the site of income tax and GST. So before going to the main topic, which is delayed payment to these MSMEs and the way forward, I thought that briefly I should touch upon the points of who are the micro, small and medium enterprises. So you can go to udyogadhar.gov.in, which I was referring to was the earlier name of the MSME registration, or you can go at udyamregistration.gov.in. My humble request is please go to these sites only, because in these you will find that gov.in is there, which clarifies and which confirms that these are the government sites, because there are many sites which are charging some fees for getting this Udyam registration, and they some of them may look similar to the government site, but you kindly go to any of these sites. In fact, you would not be required to pay any fees for getting your Udyam registration. So let me now start with the delayed payment to MSMEs, challenges and solution. One. Excuse me, Mukesh ji, can I ask one question on the previous? 100%, sir. Please, sir. Sir, you said that for MSME registration, the unit should be either a manufacturing or a service provider. Yeah. And trading is not yet included in that definition. Suppose there is a trading company and it provides certain, it buys certain equipment and sells that, and then as a supplier, they also do services of, say, like AMC and other things.
then what happens? And there is a service provided, and how much, whether that can unit be registered as an SME? You can get your company as registered, because you are not only, if you are doing some value addition by way of any service or any process, then No, you can, we are not doing any value addition. We are buying it and selling it. you are buying and selling, but then you are providing the AMC services also, which you rightly told. After that, whenever there is a problem, we repair it. We also provide AMC services, so we can get ourselves registered as SME. You can get, sir. Matlab, I can tell you that you can get it. Thank you, sir. And one more thing is there. See, there has been a recent notification being issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein it has been clarified that even trading units can get themselves registered as an MSME, but the purpose is very specific. That is only for the priority sector lending. And since many of the participants here will be the professionals, so I can just clarify what was the purpose of that. I had been on the board of a public sector bank also as an independent director. And many of you will also be aware, in fact, that there are certain targets for the priority sector lending. So what happened when this new notification of 26th June was issued by Ministry of MSME? So the RBI raised an issue with the Ministry of MSME that now for priority sector lending, which MSMEs may be considered, because micro and small, only these two sectors are there, which are identified by the Reserve Bank of India and the Government of India for private priority sector lending. So the RBI raised this issue with the Ministry of MSME. The Ministry of MSME replied in turn to the Reserve Bank of India that only enterprises which have their Udyam registration as micro or small enterprises should be covered as registered MSMEs, right, for the purpose of this priority sector lending. There became a hue and cry, in fact, among the banking sector with this single reply of the Ministry of MSME, because there are certain targets for all the banks, which you all will be aware that some certain percentage has to be given by all the banks to the MSCs and agriculture financing money under priority sector lending. So the reclassification was done based on this answer of the Ministry of MSME, and it was found that, you know, many banks were earlier classifying many trading activities, many other concerns, in fact, into the priority sector lending. They started reclassifying, and the impact of this is that, you know, whenever there is any gap of the target and the actual achievement by these banks, that those funds have to be invested into government securities where they can get only 2 or 3% rate of interest. So bank के लिए ये बहुत बड़ी problems हो गई थी. Then they approached to Ministry of MSME, and then Ministry of MSME issued a notification that the traders can also get their MSME registration, but that will be only for the purpose of priority sector lending. So the traders are now eligible to get loan under priority sector lending with a cheaper rate of interest, but any other facility, be it delayed payment solution, which is covered under MSMED Act, is not available to the traders, or the collateral free loan, which I suppose Mr. Jain was also referring to. There is some CGT-MSC scheme wherein you can go get loan up to 2 crore rupees without any collateral security, and government gives the guarantee. So since that financial part has already been covered by Mr. Jain very nicely, so I will stick myself to the delayed payment to MSMEs and the way forward. But whenever you have any issue, please, it will be my pleasure to reply to your queries. And may I request to Pallavi ji, you can do one favor to me. If I'm not able to read any chat, you can just read the chat, and kindly you can also raise the issue of any participant, so that ultimately this webinar is of great use for me to be a learning process with the active participation of the participants, and the participants can also get some information which I know, and they may be having some doubt on that, right? So the challenges because of the delayed payment is that it is a threat to the MSME for ability to trade. When I say ability to trade threat, so
the problem is that when these MSMEs sell any goods to anybody or provide any service to their buyers and they don't make the payment on time, these MSMEs are not able to take the further orders. In fact, whenever they are able to get any orders or they have the opportunity to have any further orders, they are always afraid that if the funds is already stuck up with one of the buyer, in fact, and I'll not be able to get the fund back, this working capital cycle is not may I request all to please unmute. मैंने निकाला तेल का, मैंने कुछ करा ही नहीं. The moderator can unmute everybody and can mute everybody, and they can unmute whenever anybody wants to raise an issue. So this delayed payment create a working capital gap also, because as I was referring to the debtors directly, if the payment is not recovered from the debtors, ultimately they will not be able to purchase the raw material again for the next order, and it creates mismatch in the cash flow. And we have seen, perhaps you all might have observed, that there have been many accounts which are into stress only because of this problem, and many of them I have also seen that have gone to be classified as NPA by the bankers only because of this one reason, without any fault on their part. So I would like to now try to highlight some of the provisions. I would not like to highlight the provisions which are of routine nature, like civil suit, legal case. So something very specific I would like to discuss here. One is protection under the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006. There are certain provisions. Special sections are there under this MSMED Act. I would like to touch upon those sections. Then there is a very important Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Though, friends, we all know that it's not a recovery code, but it has definitely proved a very important tool in the hands of MSMEs, or for that purpose, for any enterprise to recover their dues on time. The third one is discounting of bills under TRADS platform. And one very important thing which we have started at Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises is that we have launched a portal, in fact, in the name of nodefaulters.com. We are also trying to find out some solution, and there have been many success stories. We started this about 3-4 months back, and there are many success stories so far wherein these MSMEs have been able to recover their delayed payment or stuck up payment from their buyers. So let me briefly explain you how it nodefaulters.com works. This was perhaps some old slide. As on today, more than 800 crore defaults have been registered on this platform. You can report, if you are an MSME, you can report your default. What we do, in fact, we contact your buyers. We request them to make the payment on time and not to indulge in any type of litigation. If they don't listen to our request, what we do, we provide legal services to these MSMEs through MSMED Act, through Insolvency and Bankruptcy Code, and if need be, through another legal measures. So for protection under the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006, what is the protection being given to these MS only? First and foremost thing, that this protection is allowed only to micro and small enterprises. Medium enterprises are not covered to or not able to take advantage of these sections, which I will now discuss, section 15 onwards of this MSMED Act. Only micro and small enterprises are eligible to get the benefit of these provisions which are under MSMED Act.
This says that payment to any micro and small enterprises has to be made within 45 days. And I may tell you with the full confidence that this government is very open to listen to the suggestions. In fact, I was invited by Honorable Prime Minister, as Pallavi ji was referring to, and this was a 3 hours 40 minutes long discussion with the Honorable Prime Minister, and we were only 7 participants were there. So 7 log hum the, or everybody spoke about 30 to 40 minutes. I also spoke about 40 minutes, in fact, and we submitted various suggestions to the Honorable Prime Minister. There was no minister, there was no secretary, there was nobody from the Prime Minister's office also, except only one officer who was just noting down, in fact, what we were suggesting to the Honorable Prime Minister. So this government is open to the suggestion. On 24th also, we have a meeting with the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. They have invited us for certain suggestions. So maybe some suggestions, if you get Pravinji during this webinar, I would request you to please share those suggestions to me. I'll try to put those suggestions to the Ministry of MSME, as we are having a meeting with the top officials on 24th. So this MSME Act provision is that payment to any micro and small enterprises has to be made within 45 days. If it is not made, then compound interest with monthly rest to the supplier at 3 times of the bank rate. So bank rate here is, don't misunderstood that rate which is charged by the banks from the lenders. It is the bank rate which is Reserve Bank of India rate, in fact. So 3 times of that rate is to be paid beyond 45 days. And even if it is not paid, the reference is to be made to the Micro and Small Enterprises Facilitation Council. 2-3 important things I would like to touch upon here on this slide. Suppose there is an agreement between buyer and seller that will make the payment in 60 days. Then what will happen? Can anybody let me know that what is your opinion, that if both the buyer and seller agree that payment will be made in 60 days or 90 days, then what can be done, in fact? If anybody would like to. So let me tell you, friend, that any agreement cannot be above the act. So there is an act that payment has to be made within 45 days, meaning thereby that even if the buyer and seller agrees to make the payment beyond 45 days, it's okay, but interest will be payable. And I am quite confident that many of the chartered accountants who are participating in this webinar will definitely be assuring that if there is any supply or any outstanding to the MSME, that this interest provision is being done in the books of account. So this is whatever I told, section 15, that 45 days payment terms. And this section 16 also, I just discussed, in fact, that interest has to be paid at the rate of 3 times. And this section 18, I also referred that, if it is not done, then you can raise the issue to Micro and Small Enterprise Facilitation Council. So these were the 2 sections. Now the issue is that how to make the reference, in fact, to these Micro Small Enterprise Facilitation Council. So there is one e-Samadhan portal. So wherein this e-Samadhan, these facilitation councils have been mandated to decide, in fact, within a period of 90 days from the date of making such reference as per provision laid down in the Act. But I don't have any hesitation in accepting and agreeing to what was the discussion, in fact, before we started this webinar today officially, that this 90 days provision is not being adhered under any circumstances. One very important thing, that you should have your valid Udyam registration certificate with you
to be able to avail this facility. So as I was referring to you at the initial stage, that please get your Udyam registration as early as possible. I would also like to submit here that we at Chamber of Indian Micro, Small and Medium Enterprises have started a Swavlamban Facility Center at our Delhi center, Connaught, which is based at located at Connaught Place, Barakhamba Road. We are providing absolutely free of cost consultancy to any micro, small and medium enterprises and the startup. Anybody can take this benefit, in fact, to get free of cost. And when I say free of cost, absolutely free of cost, not even a single penny is charged by our team. We have a team of professionals who are chartered accountant, company secretaries, lawyers, and so on. And we don't charge even a single penny for any consultancy to these MSMEs or to the startups. Recently, we have started an incubation center for the startups, wherein also we are providing infrastructure facilities like computers, seating arrangement, ACs, printers, computers, Wi-Fi, absolutely free of cost. We are providing the mentorship services, and we are arranging the investors also for them. So these are the documents which will be required for referring any case to e-Samadhan. One is your Udyam registration, which I refer to, that you definitely have to have your Udyam registration to avail the facility under Micro, Small and Medium Enterprise Development Act. Another one is your Aadhaar number and mobile number of the director, partner or proprietor, whosoever has got their Udyam registration being done, because one OTP will come on this mobile number. सर मैं 10 मिनट में करता हूँ आपको एक तरह इसमें हूँ मैं एक लेक्चर में bias detail will be required, and then work order and invoices will be required. So here one suggestion to the MSME, that whenever you decide to accept any order, please request your buyer to send a work order to you. Without work order, my request will be, please don't accept. Don't be aggressive. Please don't accept any order unless you get a work order. This work order will maybe in any format. It can be in the form of an email also, but you can request your buyer that just send a email, so that both of us are on the same page, that the quantity, delivery schedule, rates, the specification for the, at least for future reference, are there on record. So you request your buyer to send you a work order. So, and these work orders will be required to be submitted for getting any facility under this e-Samadhan. So this is the website, samadhan.msme.gov.in. You need to go on this site. There you will find on this portion, there is a tab called case filing for entrepreneurs, MSE unit. So there is this tab, you need to click it. You need to put your Udyam registration, and then there will be a OTP, as I was referring to. You need to put the OTP being received on your mobile number and submit it, confirm it. You will see that this type of a screen will be there on your computer, because this will be pre-filled information. Since you are already registered as an Udyam registration, so your Udyam registration number, your company or your business name, your address, all these things will be there on your screen. Please see these information. And now you enter your buyers or the respondent details, their address, name, PIN code, district. Very important is that you have to clearly mention their mobile number, the correct mobile number, and the email address on which these MSCFCs will contact your buyers.
Then, as I was referring to, that you need your work orders and the invoices. So you have to upload your work order and invoices now. And as you can see that there are only 3 options for work order and invoices to be uploaded. If you have more than 3 work order or more than 3 invoices, you can file these in one file only. You just make a PDF of maybe 100 invoices and upload only one file. Then there will be final submission, and before final submission, all the details about yourself, your buyers, default amount, everything will be visible to you. You can just see them, if you are sure that every detail is okay, you can submit your application. So this is basically a recap of the process which I just referred to. So any question so far about this protection under MSME Act? If anybody wants to ask, or Pallavi, if there is any chat for related to this provision, you can just let me know. Chat box. So first one is, do school comes under MSME? Hello? Yeah. So first one is, do school comes under MSME? No, ma'am. Second one is, it is generally observed that the big corporate houses generally are not keen to do businesses with the registered MSME due to time-bound liability to make payment and the liability to pay interest due to delayed payment. These corporate have generally terms of making payment after 45 days, maybe 2 to 3 months. Is it not a deterrent to get oneself registered as MSME, as it may inhibit big corporate to do business with MSMEs? Good question, but I'll say no. Answer to this question will be no, because I don't feel that this will be a deterrent for the MSMEs. In fact, why I'm saying this thing, that because it is not possible for the large corporate to do their business without the support of MSMEs. Most of their suppliers are these micro, small and medium enterprises. If all MSMEs get themselves registered, it will not be possible. If not me, somebody else will be there to supply the goods and services to them. If that is also registered under MSME Act, and it's very unfortunate that most of the time you all might have heard that there are more than 6 crore MSMEs and 11 crore workers are there on these 6 crore MSMEs. As on today, the registered MSMEs on this Udyam registration is approximately 1 crore only. So may I kindly request through this important channel, in fact, of JIPA, that you please request all your clients that they should register themselves as MSME, so that all our manufacturing and service sector enterprise should be registered as Udyam registration being available for micro, small and medium enterprises. And then it will be very difficult for the large corporate to have any differentiation within the registered and non-registered MSMEs. Sir, how does e-Udyam work at the back end? Suppose I am an SME and I lodge a complaint for recovery of my dues, my invoices. I have done it. Now, how does it function at the back end or the mid office or the back office to help me in recovering? Do they approach my buyer? How do they approach it? There could be a vice versa situation also, that I have not paid any MSME. So how would they treat me then? So I will try to reply your question in 2-3 parts. One is, perhaps your question is that can there be any complaint against another MSME also, right? So suppose you are an MSME, can any other MSME can file a complaint against the other micro and small enterprise also? The answer is yes. Only condition under this MSME Act is that the supplier need to be registered as micro and small enterprises. Buyer can be anybody. Buyer can be a large corporate, a government company, an MSME, or anybody else. No, my question is not that way. No. The second part, I'll just explain you. The second part of your question is that how the these MSCFCs work, in the back end. So what happens when you file your documents?
they go through the basic document, the work order and the invoices and your Udyam registration, and they try to find out that the jurisdiction is correct. You are the manufacturers actually, or the service provider. You are not the trader, because as I was referring to that, even the traders are now eligible to get their Udyam registration, but for any specific purpose. If all the things are okay, then they convert it into a case. So your application is converted into a case. Once the application is converted into a case, a notice goes to your buyer to appear before the Micro Small Enterprise Facilitation Council. A date is given that please come, and you and your respondent, your buyer, both are advised on for a particular date that you come and present yourself before this facilitation council. So this is the procedure of the backend. Anything else, if I can just let you know? Now, suppose the buyer doesn't agree. He says that, no, I had asked that it should be delivered by 31st. It came, the delivery, you see, is on the 1st of next month. There was a delayed delivery. Or I asked for quality A, and later on I found that no doubt it was B plus, it was not A. So some dispute may be there, and that's why during this negotiation, the delay has taken place. Yeah. So I would like to. How are these sorted out? I got your point. So you are referring to any dispute amongst the buyers and sellers. So dispute should be before the date of your filing application on this Samadhan portal. Suppose they raise any dispute after you filed your application on this Samadhan portal, there is the dispute has no meaning, in fact, because there is very specific provision under the MSMED Act that the deemed acceptance of the goods. There is a provision that if no dispute is raised within 10 days of acceptance of invoice, it will be deemed as acceptance of invoice. Within 10 days of the supply of goods, it will be deemed as acceptance of invoice. So dispute can be raised before you filed your reference to these MSCFC. After you file your, it is in case of insolvency and bankruptcy code also, which I will refer to now, but dispute raised after your filing reference is of no concern. But if any dispute has been raised by your buyer within this time frame, definitely no court, no facilitation council, no arbitrator, then it's a civil case. First, you both have to decide that whether the quality which is not as per the work order is acceptable to your buyer or not. Whether the delayed delivery beyond the agreed terms between the buyer and seller is acceptable to the buyer or not. Maybe that it has to supply the goods to some other party, and that other party condition is also that within that particular period material has to be supplied. So these things, if you have complied all the terms and condition of the work order, I suppose any court, any facilitation council can do any favorable decision in favor of the supplier. Otherwise, if there is any pre-existing dispute, no court can support the suppliers. So there is a wing of the Delhi High Court that is also called Samadhan, and they take up all the arbitration cases referred by the Delhi High Court. These two are different, or the name is similar? No, that is different, sir. That is different. This Samadhan is of MSME ministry. Okay. Thank you, sir. Thank you. May I ask you a question? Please, sir. As Sir, you said, better will be if you kindly introduce you also, and you are a professional or an MSME. I am Vipin Bali from Pushkar Industries Private Limited and registered with the MSME. I had filed my this delayed payments case in 2019, but they came up just now, as you just not said, that within 10 days, if the buyer does not raise any objection, so that is accepted, the invoice is accepted. But if he raises an objection after, say, 3 or 4 months, when you start asking him for payments, then is his objection acceptable? No. The MSCFC in that case should not accept this dispute being raised by your buyer. Where are you located, sir? I am in Delhi. And what is the amount?
The amount is after it was about 14 lakh rupees, and after I filed this case, notice in arbitration. So now the amount with the interest and all is about 30 lakh rupees. So as I told you, no, if it is after 3-4 months, the arbitrator should not, and you can refer this provision, whereas the deemed acceptance provision is very well there in MSME Act. For any reference, you can meet me anytime. So Okay. that after going through the documents, I can perhaps will be Sure. in a Sure. position to better So, advise. because I have filed 3 of my complaints, and one is come up for the evidence now. And I don't know how does it after this evidence, even if I get the orders in my favor, how is it executed then? Very important thing. So I'll clarify you this part also. So that is the backlog, in fact, and that is the defect within this act, for which we submitted certain suggestions to the government, and Okay. some states have already accepted our suggestions. So I'll just let you know what are the provisions now for the execution of the award, in fact, which you are referring to. Suppose you get the award in your favor, how to get your funds? I suppose this is the question, no? So you Yes, have to file an application at the court for execution. That is called execution petition. So you have to file an execution petition. And then in that case, if the opposite party wants to contest that execution petition, the provision is that they have to deposit minimum 75% of the Right. award amount Right. in the court. Only then they can contest this execution petition. Okay. Sir, that 75% remains with the court, or it is With the given court. to, With the court. then what is the purpose of depositing that 75%? The purpose is, sir, see, on this provision, many of the companies may find it proper to make the payment to their suppliers, because 75% तो ये जमा हो गया उनका, पता नहीं कोर्ट से कब 3 साल 4 साल 5 साल बाद डिसीजन होगा, and then they need to pay a lot of fees to the advocates also. So we have seen that there are many cases that, you know, in place of depositing 75% at the court, they try to negotiate it. Because what these poor MSMEs, we the poor MSMEs, what we do, in fact, in most of the cases, we do negotiation. अच्छा चलो ब्याज छोड़ दो, आधा ब्याज दे दो, principal से भी कुछ कम दे दो, you know, अभी दे दो, आज दे दो, because if they will get the money today, they may, you know, churn it out for their future businesses. तो वहां पर वो कहीं negotiation हो जाता है. So this 75% is kept in a separate escrow account, or it is a pool where all these money, 75%, 1,000 companies are depositing, and then I have to identify whether my money has been used or not. No, it will not be used. You have to deposit it as a draft, in fact. Agreed. But whether there is only one account with the court, or there are separate escrow accounts are open for each claimant. No, it will be a draft. I don't think they encash this draft or not. So validity of the draft as per the negotiable instrument act is hardly 3 months. But how does it affect, in fact, because different courts there cannot be a common pool account, in fact. And or it is kept in a separate escrow account in my name with the court. No. So it will be this. I'll definitely try to find out. But how will it impact? It will not come to you, in fact. Agreed. So suppose I am the buyer. I have to deposit 75% and I deposit it with the government. So how do I show it in my balance sheet then? Whether I have paid to my creditor, and the creditor will say, no, it has not. It is a security deposit, sir. It's a security deposit. You are not paid to the buyers. No, buyer account you cannot nullify. Agreed, sir. Thank you. If you will show it, you have paid. Can the buyer get this order set aside? Yeah, why not, sir? If there is an appeal. No, so then no, that is appeal after he deposited 75%. Then only he can go forward with that. Yes, sir. Okay, and how long does that portion take? Time does that portion take after you get it executed and he fights for it? And any time limit for that? Only Prabhu knows, sir. I would not like to comment on this because these are judicial matters. So आप सभी जानते हैं what to say. No.
So why is the fee structure different in Delhi, like this Delhi Arbitration Center and Delhi International Arbitration Center? Why is the fee structure for these cases different? Sir, मैं आपको बताता हूँ, particularly for this MSCFC also. See what happens. This is a act which is MSMED Act 2006, which I was referring to time and again during my discussion. Yes. But when we talk about these MSCFCs, this is a state matter. So every state have drafted their own rules and regulations. I have personally requested to the minister, in fact, many times, that there should be common rules and regulation. So what happens, in fact, if you'll see, you can go to our this website, nodefaulters.com, wherein you will find rules and regulations of all the states of the country. We have compiled all the rules and regulations of all the states. कहीं पर कोई फॉर्म है डिफाइन कर रखा है, कहीं पर फॉर्म नहीं है, कहीं पर वो फीस लेते हैं, कहीं पर फीस नहीं लेते हैं, कहीं पर वो हार्ड कॉपी मांगते हैं, कहीं पर हार्ड कॉपी नहीं मांगते हैं. So there are different rules and regulations of different states. As I was referring to, हमने कुछ स्टेट में we are able to convince some states, in fact, वहाँ उन्होंने ये कर दिया है कि in place of going to the courts for the execution of your award, वहाँ पर कर दिया कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत वो ये जो रिकवरी है वो होगी. उसमें मतलब ये होता है कि द अवार्ड गोज टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो अपने तहसीलदार को देते हैं, वो जाके वहाँ डम 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 ढोल बजाते हैं और वो रिकवरी सर्टिफिकेट जो इशू होता है, उस तरह का प्रोविजन है वो इस इन अवार्ड्स के लिए एप्लीकेबल है. उसमें आपको कहीं किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट वी आर रिक्वेस्टिंग टू द गवर्नमेंट दैट यू प्लीज इम्प्लीमेंट दिस प्रोविजन across the country, in fact, so that these small entrepreneurs are not thrown into this long litigation. देखिए अभी कुछ काफी कुछ हो गया है, काफी कुछ होना है, but I am quite confident that अगले 2-3 साल के अंदर lot of changes are going to happen in this MSMED Act. नहीं सर, जैसे अब दिल्ली मैंने किया है, दिल्ली आर्बिट्रेशन सेंटर में मेरा केस लगा है. In that my recovery is about 7 lakh rupees. So 7 lakhs, but they are charging the fees is about 60,000 rupees. And in Delhi International Arbitration Center for 3 lakh rupees, the fees is 57,000 rupees. Why is there so much difference? Sir, I'll tell you, Vipinji, I have been doing arbitrations and mediations now for the past 40 years, commercial, infrastructure and others. And there are umpty number of arbitration centers in India and Delhi everywhere. So what happens is that there is an arbitration act which prescribes the fees for everything, and each arbitration center has also set up its own rules. When you filed your case for arbitration as a claimant, you certainly should have gone through those rules. And each arbitration center, there is one in Nitibag, there is one almost every Indian Council of Arbitration which is affiliated with FICCI, they have got their own rules. There is one with PhD Chamber of Commerce, they've got their own rules. Everybody does it. To even they may be putting a little lower price to attract more cases, but ICA charges little more. ICA doesn't have its own center, they have to hire it from outside. SOCM also has to hire from outside. CII doesn't have any arbitration rules, nothing, don't have any arbitration center. Each center has got its own. If you go to Bombay Chamber of Commerce, they charge their own fees. They only take but since it is in the MSME, entire country, then the fee structure should be similar. It should not be so much difference that it's almost 3 times or 2 times. No. When you talk to e-Samadhan, then everything is okay. Once you come out of e-Samadhan, then you are not going there as an SME or anything. Then it is that you are going as a claimant and there is a respondent to it and he has to defend himself. That's all. And you have to, if you go there, you see. सर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे डिस्कशन से कुछ नहीं होगा. देखिए ये क्या है, देखिए ये क्या arbitration. Let me satisfy Mr. Vipin Bali. Every arbitration is based on the, as Mukesh ji was telling, there has to be a work order. Every work order must have a arbitration clause. So that arbitration clause 99% also states the venue of the arbitration where it has to take place. So if it is already there, then you are bound by it. Arbitration is mainly agreement based. I agree to that, but what I am saying is why the fee structure difference is too high.
See, for if 7 lakh rupees you're charging us 60,000, and for 3 lakh rupees you're charging 57,000. Why the difference between these two centers? There should be some control on that. Depending on the infrastructure they provide you. No, what sir, infrastructure is always the same. There is hardly any difference. You've been visiting the Delhi International Arbitration Center at High Court and the Delhi Arbitration Center at Tisazari. The infrastructure is the same. The same advocates, everything same. But why the fee structure is so high? We should work on this thing also. And you maybe take the suggestion that Mr. Gupta, please, can we take on this conversation after your end of your speech? Okay, let us go to the main chapter now. Yes. Let us go to the main topic. Please, Gupta, please carry on. Hello. जी सर. Sir, please carry on. Or thereafter we will discuss this situation. Right, sir? देखिए मेरा कंसर्न मेरा ये है, आपका कोई इशू है आप डिस्कस करिए, पर आपस में यहाँ ये मुझे पता नहीं है कि वेबिनार है या कोई डिस्कशन. Yes, I think so. इस तरह से डिस्कशन में तो फिर कोई मतलब कोई पर्पस नहीं है, या तो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा. That will be taken after the end of the webinar. मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि देखिए ये इन्होंने बहुत ही वैलिड एक क्वेश्चन रेज किया कि भाई ये डिफरेंस फीस है यहाँ पर डिफरेंट सेंटर्स. So this is a valid question and we will definitely take it up with the concerned authorities. So my request will be, please let us know this fee structure और उसका कोई हमें कोई अगर notification है या कोई proof है, please my request will be, please share it with us. We'll definitely take it up with the concerned authorities. So the another good tool in the hand of any business is whether it's a MSME, whether it's a trading activity, whether it's a large corporate, it is some provisions under Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Under this code, if there is any default by your buyer, then you can take benefit of this. There are certain conditions for going under this Insolvency and Bankruptcy Code. One is that default amount need to be more than 1 crore rupees. It was earlier 1 lakh rupees. Then there were very success stories, in fact, under this Insolvency and Bankruptcy Code, that if the default was 1 lakh rupees, you can file you can raise a demand notice, and if the money is not paid, you can file a petition to the special tribunal, which is National Company Law Tribunal. And so this is one condition, but now that amount has increased to 1 crore rupees. So a little hardship in the hands of MSME. There should not be any pre-existing disputes, as we were discussing. So under this Insolvency and Bankruptcy Code, if there is any default of more than 1 crore rupees by any corporate buyers, then you need to send a demand notice under Section 8 of this Insolvency and Bankruptcy Code, giving a time of 10 days. So you need to mention that if you will not pay the amount within 10 days, we will file a petition with the National Company Law Tribunal, and the buyer need to be a corporate. So these are 3 conditions. If these conditions are fulfilled, then it's a very strong tool in the hands of any business, trading, manufacturing, whatever. So it's very important and very strong tool to recover the money, though theoretically it's not a recovery code. So process, as I was referring to, send a demand notice giving 10 days notice, and if your buyer doesn't make the payment, then you can file an application to Honorable Adjudicating Authority, which is National Company Law Tribunal. Why I'm saying that it's a very strong tool in the hands of any business, that implications are very problematic for this corporate if they don't make the payment, or if the case is admitted by these NCLT.
that the present directors will be suspended. A professional will be appointed by Honorable NCLT to run the company, and then process will be completed in 180 days. And then not only this, the individual insolvency will also start against the directors of the company. So anything about on this insolvency and bankruptcy code, if anybody wants to discuss. The third one is discounting of bills through trades platform. There are 3 trade platforms as of today. This is Trade Receivables Electronic Discounting System, and so it works like Bombay Stock Exchange. Any stock exchange is there. So there are 3 exchanges, in fact, under this trade platform as on today. It's an online exchange platform, and suppliers upload their invoices, bill for goods and services. Once buyer accept the bills online, the finance, there are number of financiers available. All the banks, NBFCs, they are available, and they are ready to bid based on the rating of the buyers. And it is without recourse. When I say without recourse, when I suppose I am an MSME, I upload my bill, I supplied a goods to say, for example, Maruti Udyog. I upload this bill on this trade platform, and my bill is discounted by any lender. Suppose PNB discounts my bill, and everything is online. Tomorrow, suppose Maruti doesn't pay to PNB, to the lender cannot come back to me because it is without recourse. Once my bill is discounted, payment is made to me, that's all. The lender who has discounted my bill cannot come back to me, whether it gets the payment or not. And who are the buyers who are mandated to be registered on this trade platform? There are 2 categories. One is the government companies. So all central public sector enterprises are mandated to be registered on this trade platform as a buyer, and all other private companies with annual turnover of rupees 500 crore or more are mandated to be registered on this trade platform as a buyer. We have this YouTube channel named MSME Helpline. I feel you will find answer to any of your question. You can just go to MSME Helpline YouTube channel. I have tried to post, videos on almost all the subjects, all the topics related to the micro, small and medium enterprises. As was referred to Pallavi, that we have this MSME Ki Pashala app also, wherein we have tried to educate these MSMEs on very basic topics like how to decide which business to do, type of constitution, how to decide which constitution should be good for any business, all registrations being required by micro, small and medium enterprises or for any businesses. What is the definition of MSME and Udyam registration and how to get it? What is startup definition? How to prepare a project report? What are the required documents for loan application? What are major loan schemes? How to, and so forth. So thank you very much from my side. And I again thank you to the organizers and the participants for sparing such long hours, in fact, on this Saturday, where you might be willing to go with your family for the marketing, for movie and so on and so forth. So thank you very much. Mukesh ji, can I ask one question, please? Please, sir, please. Will be pleasure. Sir, suppose I have some recoveries to be done from my buyer who is overseas. So how do we? Sir, for Samadhan and others, they help us? Sir, ये ना possible इसलिए नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ. There is no bar, in fact. What these Samadhan will do, these facilitation council will do, they will send a mail, in fact, to the buyer. वो buyer आएगा ही नहीं से बाहर से. So it's a basically it's a toothless organization. तो इनके पास कोई ऐसी power नहीं है. इसे facilitation council, मतलब ये खाली ये कह सकते हैं आपसे कि भाई आप दोनों buyer seller को बुला के कहते हैं कि भाई आप आपस में फैसला कर लो.
नेगोशिएशन कर लो. कॉन्सिलिएशन इज द मेन एम ऑफ दिस कॉन्सिलिएशन सेंटर. तो ये उनको एक बार, दो बार, तीन बार ये भेज सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं उनको बुलाने के लिए. एंड द जनरल प्रोविजन इज दैट आफ्टर 3 notices ex parte order need to be passed in fact. So वो ex parte order भी कर देंगे, then execution I don't know how it will be done. So is there any list of blacklisted buyers? Suppose there is a buyer, he has defaulted with me, he has defaulted with you, he has defaulted with Mr. Jan, and then he continues to do all those things. And then is there any blacklist of buyers like this in India for an overseas buyers? Normally, earlier there used to be with ECGC, there used to be a blacklist of buyers, and now I don't think that is there. But तो आप उनका सर देखिए, रेटिंग तो आप डीएनबी वगैरह की रिपोर्ट तो आप ले ही सकते हैं उनसे, है ना. एंड राइट, सो ईसीजी से भी ले सकते हैं, डीएनबी रिपोर्ट आप ले सकते हैं ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द फॉरेन बायर्स इन फैक्ट. And we tried on this nodefaulters.com what we initially did in fact to answer your question. तो हमने कहा इसमें there was a tab in fact find defaulters. So हमने कहा कि because like CIBIL is there, so अगर आप देखेंगे इस साइट पे जाएंगे तो उसमें आपको एक लिखा मिलेगा कि as CIBIL is for the financial default, this no defaulters will be for operational default, right? So we put a tab in fact, so report default and find defaulters. तो हमने वो बनाने की कोशिश की थी that suppose you are there, so you before accepting any order in fact from any company, you should do your due diligence कि भैया अगर उनके against में 10 cases already registered हैं, then you should not you should not accept any order from that company. लेकिन वो लोगों ने कहा कि फिर ये ना, because even Reserve Bank of India has not agreed to publicly make this defaulters list of the bankers in fact. So we thought that it may create some legal issues. But what we are requesting to the government, to the Ministry of MSME, we have told them that, you know, all the orders of Supreme Court, High Court and other courts are available online. I can just go and see orders of any case in fact online. So what we are requesting to the government that the orders of all these MSCFCs should also be visible to the public in fact in a searchable mode. So suppose there is a company called XYZ and if I go to the website of this Samadhan of Ministry of MSME, I put a name XYZ, I should be able to find that suppose 10 cases are already, you know, pending against this company on different MSCFCs, then I'll be विजिबल कि भैया ये नहीं करना चाहिए. कोशिश कीजिए, आप दुआ कीजिए कि हमारी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाए सरकार द्वारा. So we are. तो आप आरबीआई का केस या बैंक का केस दे रहे हैं ना, एग्जांपल, दैट इज अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. they have then like any government officer, they have an oath of secrecy. They have not to reveal such things. That's why even earlier governors also, when they were challenged for this, we are not putting the list of defaulters, big defaulters, sharing the list of big defaulters, because we are bound by this act, that we have to bound by the secrecy of this. But as far as MSME defaulters are concerned, MSME Ministry or NSIC, they can put the list that they are, there is nothing like secrecy in that. So Banking Regulation Act certainly imposes secrecy on banks and RBI. The Bank of India Act. But MSME Act doesn't impose any secrecy on this. नहीं, वो डिफेमेशन का केस हो जाता है सर. उसमें क्या है ना, देखो जब तक कोई केस डिसाइड नहीं हो किसी के फेवर में ना, तो डिफॉल्ट अगर किसी ने कर दिया, जब तक वो डिसाइड. ई समाधान की हम बात कर रहे हैं. अगर दूसरा आपका ई समाधान भी तो एक तरह का क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है. हमने ई समाधान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं ना सर कि भाई गवर्नमेंट से हम कह रहे हैं कि जितने ऑर्डर्स हैं सारे आप डालिए, आप ऑनलाइन डालिए. Perhaps that will solve your issue. Okay, thank you very much. I don't want to prolong because Mr. Jan says that we can take it in the end. Yes, sir. Sir, can you share your contact details? Is there any issue? It's all available here, sir. So I have given my mobile number, my email ID. You can note down and you can call me. 1 minute, sir. Hold on. Let me take the pic of this. So you can contact me on info@indiansmechamber.com or in a simple way, info@msmehelpline.com also. I am available there also. Thank you very much, sir. Thanks.
two questions on the chat box. Is it mandatory to declare oneself as registered MSME to large corporate in order to facilitate his business, which he might not get if he declares his firm as MSME? अलवी मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही. मैं पढ़ देता हूँ, ये चैट में पढ़ देता हूँ. इज इट मैंडेटरी टू डिक्लेयर oneself as registered MSME to large corporate in order to facilitate his business, which he might not get if he declares his firm as MSME? I am unable to understand the question. In fact, उसका मतलब क्या हुआ? It is mandatory to declare oneself as registered MSME to large corporate in order to facilitate his business, which he might not get if he declares his firm as an MSME. I'm not able to understand the question, in fact. And see, my suggestion will be related to this is that, you know, on every invoice where you put your GST number, please mention your MSME registration number also, along with the type of registration as micro, small or medium enterprises. Because what happens, every company has to file a form which also was, you know, suggested by us. And there is a form MSME 1, which was introduced by Ministry of Corporate Affairs, which says that, you know, every company, be it MSME or non-MSME, any corporate has to file this MSME form 2 times in a year, half yearly. April to September का जो data है, it has to be filed within 30 days of end of September, means 30th October, and October to March in the month of April. So they have to mention what is required to be filed in this MSME form number 1 with the Ministry of Corporate Affairs by all the companies. Default or delay beyond 45 days to any micro and small enterprises. Name of each company, region of the delay, amount of the delay, whether the provision of interest has been done or not. All these information have to be filed, in fact. What many companies do, in fact, they mention that, you know, we are not aware whether the supplier is an MSME or not, because it is, I suppose the practice is that all the companies send the mails to their suppliers that if you are an MSME, please confirm. And in the vendor registration form also, now all the large companies are having this column in the vendor registration form that whether you are a registered micro, small and medium enterprises, and they are demanding their Udyam registration certificate also. But many times these MSMEs are not too good in, you know, communicating with the emails. उनको वो email मिलती नहीं है, मिलती है तो देखते नहीं है, देखते हैं तो उसका जवाब देते नहीं है. Now these large corporates may take the benefit, in fact, mentioning that we are not aware whether this company is an registered MSME or not. So my suggestion will be that on every invoice, please mention the Udyam registration number also along with your GST registration. What are the charges of bill discounting? Somebody has told that bill discounting facility is available between 8 to 9% interest rate. To some extent, yes. And see, bill discounting under this trade platform is basically based on the credential of the large corporate, not on your credential. So what happens, in fact, suppose there is a BHEL, there are almost all banks who have finance to this BHEL, they know their conduct. They know that whenever they will make any payment by discounting of their purchase bill, they will automatically be able to, you know, debit from their account, auto debit कर लेंगे. So वहाँ पर many lenders give very fine rate, in fact, as these are based on the credential of the large corporates. Most of them are A rated or double A rated or even triple A rated. That was really fruitful explanation of such a relevant topic. It was great learning experience for us. I would like to thank both the speakers that they just stick to the topic and time. Thank you, Vikas sir and Mukesh sir, for such a knowledgeable session. First and foremost, I would like to express my appreciation to the speaker and guest of honor for their valuable input on most
most talked about topic on MSME finance and debt recovery. I hope that you all have found the session very useful. It has been honored to be among such a accomplished individual. Thanks for being here and taking time patiently listening to what a speaker had to say. I wish you all a blessed day. Now I would like to invite Praveen sir for a formal vote of thanks and concluding. Thank you, Pulvi. We are thankful to our guest of honor, Sri Raj Chawla ji, Mr. P.D. Gupta ji, and eminent speakers, Sri Vikas Jain ji, Mukesh Mohan Gupta ji, and our moderator, Sandeep Sharma ji and Sri Pallavi Agarwal ji. Thanks a lot for their deliberations. And for any inquiry, assistance, or support services, anyone can contact to us. And we will coordinate with our eminent speakers and any level of authority to solve their issues more amicably. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Namaskar, sir.